theirs to the next level? Do you want to have it as a sole proprietor, single member company? भाई मैंने चलानी है इसको, मैंने अपने हाथ में रखना है इसको, या मैंने इसको partner करना है इसको. So you need to be very clear with regards to what vision you have, because that's where that's where you start actually. That's where you're going to build it. कि आपने कहाँ से इसको लेके चलना है आगे, किस lead में, किस direction में लेके चलना है इसको. Not working. Not working. So basically, the main law that governs around the company's formation is the Companies Act of 2017. आप लोगों ने शायद पहले सुना Companies Ordinance 1984 का, which was repealed by the Companies Act of 2017. Interestingly, up till December 2021, there wasn't a definition about startup in the Companies Act. December 21 say amendments were made to this law where they added startup company within this law. There are three, I mean, there are more sort of companies, but I'm going to be very specific related to startups and investors. Sole proprietor association of persons, AOP, जिसको हम कहते हैं, या partnership कहते हैं, and there's going to be limited company. So I'm going to start with the very basic. 80% of the companies then start working in Pakistan, start as sole proprietor. It's very easy to set up. जो सारी इसकी liabilities हैं, जो सारे actions हैं, that stay within your own power. If you get registered with the SECP, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, you can form a single member company, SMC जिसको हम कहते हैं, private limited. The difficulty when it comes to raising investment, because investors have a certain, they reluctant to work with a sole proprietor. यार ये तो बिल्कुल अकेले उसमें हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो शायद वो इतना इन्वेस्ट करना, उसमें थोड़ा सा दिल भी a little cautious about investing raise funds. Sole proprietorship is registered with FBR. अगर आप लोगों ने इसको SECP level में, तो initially you have to have an NTN, जो कि FBR से within 24 hours आप लोगों को एक NTN मिल जाता है. I think pretty much what I know from the different NICs, mostly people start with. So anyone here is registered with as a sole proprietor? Anyone registered? You're already directed towards. Next is Association of Partners. Partnerships. Partnership is registered when two or more persons, they come together to start venture. They register a partnership deed. It's the registration is optional. This is a legal document, जिसको हम कहते हैं partnership deed. It is registered with the CRO, Company Registration Office, जो कि हर district में, हर city में होता है. Unlimited liability. When I say by unlimited liability, that every partner will be limit liability to its own extent. यही अगर आप SECP में बाद में register करें, so you will have an option. The people who are taking notes, I can share the presentation with you later on as well. So if you don't have to take pictures, बाद में आपको presentation share कर लूँगी मैं आपसे बाद में, ठीक है? Jointly solely, whenever you partnership, आप उसमें ये the document that's governing it, the partnership deed, you basically chalk it down, give regards to my liability in it, regards to the other partners in it. So for some liabilities, you are jointly solely, as mentioned, jointly solely liability. There are certain liabilities जहाँ पे मेरे extent तक होंगी, जहाँ पे मैंने contribution इसमें कुछ liabilities होंगी जो हमें jointly, for example, loss है, we will jointly be liable to handle this issue. Accordingly, share profit and loss of responsibilities. Okay, limited company. SECP के बारे में किस-किसको basic idea है? What is SECP about? So SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, is basically the regulatory body जहाँ पे या जो companies को register करता है, company को monitors करता है, ठीक है? So when you register yourself with the SECP, it's उसका भी process है, I do have a video as well. We'll see if we have time. So one you can always just go to the website and we review. Stepwise, वो they let you know कि जी एक company आप register करनी है. Once you have that vision that you want to register it as a single member company, or you want to register as a limited liability company. Limited liability,
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बेस्ट थिंग इज कि जो आप लोगों के जो आईपी या जो भी आप लोग आपके पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, जो भी इन्वेंशन है आपका, जो भी आपका स्टार्टअप में चल रहा है, वो इस कंपनी के नाम पे रजिस्टर हो जाता है. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट कि आई इन्वेंटेड दिस थिंग, ये मेरी उसी उसमें, ठीक है. तो व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, सिंपली इट्स रजिस्टर्ड टू देयर नेम. तो वो हैसल निकल गया उसमें से. So it's registered in the name of that, the business name or the company. Intellectual property secured, okay. So it's limited liability. Raise capital by selling shares, equity injection. Anyone has idea about equity injection? Equity injection is about, I would also like to say one of my team member, Sher Umar Bazhan, is also here. So Sher, any idea about equity injection? Okay, equity injection is basically जब आप किसी कंपनी में आपके जो शेयर्स होते हैं टू रेज द फंड्स, अब वो शेयर्स अपने यू सेल, ठीक है. सो यू रेज those funds, so that's called, इसको अब there's a whole section about it with regard to equity. चलो, I'll discuss it later. Sorry Sher, I had to tease you for that. Okay, I'm going to go into the steps. Okay, the key steps to registering with SCCP. Firstly, you have to come up with a name with regards to the company. There's certain fees that's incorporation. It's not very, a lot of money. I think the registration, it's I think around 10,000 something. उसके certain documents होते हैं. अच्छा, formation जब भी हम बात करते हैं company formation का, तो we have this view कि there's going to be a lot of documentation and everything. But what happens is if you enroll to SCCP, सारे documentation उनके वहीं पे available होते हैं. First, अपना vision या अपना purpose जब आप mention करते हैं ना, I have to enroll as a simple member company. The documentation, everything is already on their website, because they know this कि भाई rather than कि हम उसके memorandum या articles सब बनाएं, so they already have a lot of documents available there. You just have to enroll as, register as the company you want to work as. When you roll as a single member company, they require a nomination. Of course, in case जैसे हम next of kin कहते हैं, इसी तरह we register with SCCP as a single member company. So you have to nominate someone. जैसे हम process को भी आप banking में जब सब register कराते हैं, आप account खुलवाते हैं कुछ भी, so they already have this information. अगर आप as limited liability as a LLC, limited liability corporation इसमें करते हैं, so of course there are multiple people involved in it. This is the video I was talking about, but I'll see if we have time, we can run it in the end. So memorandum and articles of association. So memorandum is basically talks about, it's basically the charter of the company you're forming. It's the root. Article talks about how you're going to be managing the company. The legal documents, contract between shareholders, that's of course if you were multiple people working together. Regulates internal management, how power and control is shared by all these documents are required for manufacturing company. And again, I'm saying this is all available on the SCCP website. It's not like you have to build them or make them. All the samples, all documents are there. Dividends accounts, board meetings, selecting board members, these all are part of your articles of association. आपकी meetings कब होंगी साल में, annually आपकी 4 quarterly meetings होनी होती हैं. You have to have a legal advisor on board. It is requirement of law that every company, either a single member company or limited liability company, has to have a legal advisor on board. And when they say legal advisor on board, the best thing is कि उन्होंने उसको किया हुआ है limited to a certain amount कि आपका जो lawyer है वो maximum आप 5,000 तक पे उसको रख सकते हैं. So there are a lot of people courts में, या even आप, you can even search for them. They are giving you services with regards to advisory, legal advisory, and it's not going to cost you a lot. So a little joke. Okay, mandatory compliances with regards to the company formation. They are audit accounts. AGMs का जैसे बताया, you have to have quarterly, annual returns आपने file करने होते हैं. So tell me one thing. आप में से किसको लग रहा है कि this is a lot? This is, we need to simplify things. किसी को लग रहा है कि यार ये बहुत सारी requirements, I don't know if we will do it or not. Please, no? Oh wow, I'm proud of you guys. Because if अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे शायद initially लगे कि I have to annual returns, but that's with it, because SCCP is a regulatory body. You'll get those rights as well. जब आप ये company form करेंगे तो आप लोगों को you get those certain rights as well.
Particulars of directors and officers, notices of change of registration in office, legal advisory, this one over there. So these are certain compliances that you'll be doing once, inshallah, you will establish your company. Key agreements with regards to your business. IP assignment agreement, I understand that whatever you guys are developing here, software hai, ya even कोई invention hai, if you, by tomorrow, let's say you want to assign certain rights to the other person, license के तौर पे, royalty के लिए, you will have to have agreements. I always insist about these things, you have इसको legal document बनाएं. मुश्किल नहीं है, वो आपको आसान करेगा. इस चीज़ में ना रहें कि यार मेरा रिलेशनशिप है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कॉलीग है. You know, when it comes to business, try this to have chalked down all those things, because it will make your life easier and it will, you know, eradicate the disputes from your life. कल को कुछ आता है. Non-disclosure agreements, non-disclosures, NDAs जिनको हम आसान उसमें कहते हैं. NDAs are basically with regards to information. NDAs आप लोगों ने भी साइन किए होंगे incubating agreements के साथ. When you're working together as co-working space, yeah, as team, there's a lot of information that is shared. आप लोगों को किसी दूसरे startup का idea होगा, कुछ उनकी inventions के related होगा. So they will be, you know, rather than कि वो disclose हों या get into the hands of the wrong people, you have to have NDA signed. कल को when you inshallah manufacturing companies, you have to have employment contracts, terms of use and agreements, private policy of website, customer contract. It's just generic. The agreements you'll be working. Okay, sustainable development goals. So these are, you know, published by UN with regards to the action they required in the coming years, where they feel like this area mein there needs to be work done. So what do you think it's किस category में startups आते हैं? I'll just look at it and let me know. Okay, which number is that on? No. Anyone else? Don't you think? I was just, you know, going through this when I was making it, and I thought in every action they've given, we're going to have startups there. It's not necessarily 1 or 2 in every gender equality, clean water and sanitation. We all get, but that is what startup is about, to give that innovation edge, have that innovation edge. इस सब में startups आ सकते हैं, इस सब में कोई ना कोई ventures शुरू हो सकते हैं. Legal equity for startups. I missed that one. So I'm going to come back to legal equity. I'm going to go further to IP first. Okay. So basically, in the laws of Pakistan, there are 3 types of intellectual property: copyrights, trademarks, anyone else? Patents. There's a 4th type as well, but it's not registered with, you know, under the Pakistani laws. उसको कहते हैं trade secrets. Like the Coca-Cola recipe, like the very core secret, how they manufacture or how they build something. In Pakistani law, it's not been bifurcated. In Pakistani law, we have 3: copyrights, patents, and trademarks. So, copyrights. Copyrights basically is about literary work, जो आपके softwares हैं. How many of you are working with startups, building of startups? So basically that comes within the umbrella of copyright. So the regulatory body or the registering body that registers the IPs is Intellectual Property Organization, IPO हम उसको कहते हैं. Copyright is आपकी जो books हैं, आपकी जो movies हैं, आपका जो music है, it all comes within the ambit of copyright. Literary work, artistic work, dramatic, paintings, everything. Author can assign copyright or grant license. Some of the companies where they ask you to build a software for them, हम उसी को कहते हैं work के ambit में आता है कि उसमें आप लोग you're the author of it, but you may not be the owner of it. When we register the same thing with IPO, Intellectual Property Organizations, अभी decent example बताती हूँ कि when I was part of Ignite, so dialysis machine, bloodless dialysis machine, bionics का आप लोगों ने सुना होगा, Farokh Usman, I believe. So that was funded by Ignite. That project was funded by Ignite. So when we registered that, उस documents में owner
So was Farooq Usman or the Bionics XYZ. Sorry, the author was him. The owner was Ignite National Technology Fund. So there's this difference in it. Well, that depends, of course, if you're working for something else, you're funding. Registration is not compulsory under the Pakistani laws. It's not required to have, you register your IP. But actually that gives you that ownership and that documentation that you need कि भाई ये certain जो book है, ये certain जो software है, ये मेरा है. The process is lengthy. When I talk about process lengthy on their part, as in IPO, एक copyright register करने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लेता है. Because they have to make sure that, within Pakistan, in some cases international as well, it has not been copied, this has not been, already published, this is not someone else's work. लेकिन जब आप register करते हैं, उसकी very, minimal सी fee है उसकी. They give you this acknowledgement, this certain कि ये software, ये details हैं, this was, let's say, ABC persons है. Acknowledgement आपके लिए it's enough to give you, a proof कि भाई I have already, मैंने अपने काम को register किया है IPO के साथ. वो register होके 1 साल 2 साल बाद जब भी आता है, but that acknowledgement वो आपको पहले मिल जाती है. इसी तरह आप अगर अपना सॉफ्टवेयर का आपने कल को इन्वेस्टमेंट करनी है, they usually ask you कि भैया आपने अगर इसको आगे से रजिस्टर करवाया है कि नहीं कराया, तो that document that from the IPO that they give you is enough that we have already initiated the process. Term of copyright, how long copyright is registered with you is like 50 years. Okay, then the other is trademarks and patents. Trademarks is your, the business name, your logos, that distinguishes from any other business that's been conducted. उसमें आपका साइन भी हो सकता है, उसमें आपके लोगोस भी हो सकते हैं, जैसे कि NIC का है, NIC का है लोगो. I got this registered with the IPO. इसमें ये जो कलर्स यूज हुए हैं, इसमें the alphabet, the capital alphabet, all the funded by Ignite, MIT, ये सब it gets registered. Patents are the inventions. आप लोगों ने कोई भी I'm going to be very simple when I quote this example कि अगर मैंने कहूँ कि जी मैंने पानी से बिजली बनाई है, ठीक है, the machinery, the goods that I've used, ठीक है, so that invention is going to be called the patent. Trademarks, as of now, only trademarks are registered online. So whenever आप लोग inshallah when you form your company and you have that name and you have that the trade mark, get it registered with IPO. ये online होता है. I think it's going to hardly take you, I think 5 minutes maybe. Fees be online होती है. अभी they're working on making patents and copyrights registration through online processes as well. So patents, how many of you are working here with patents with regards to developing an invention or something? So what is the major? I should ask this now because we have one copyright here. So let's say, so what are you working on? Okay, so that was in copyright. Yeah, that's the logo. Yes, the trade name, the business name, that's going to be the trademark. But the work you're doing, that comes within the ambit of copyright. Yeah, copyright. Please, आप बताएं. Okay. Mm-hmm. That's patent invention. Anyone else? Please. आप बताएं. Yeah, please go ahead. You're a musician. So music comes within the literary work, artistic work. So that is copyright. That is copyright. Literary work, artistic work, dramatic work, musical work, movies, software, cinematographic works, they all come within the ambit of copyright. मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो म्यूजिक है इसमें जो आपने वो कोड्स कह लें या जो भी है, that's not something that's been copied before. किससे पता चला? Sorry. Yeah, but I to have. अच्छा, जब हम अक्सर हम देखते हैं जैसे फोटोग्राफर्स अपने कोई भी क्लिप ऐड करते हैं तो दे राइट कि कॉपीराइट रिलेटेड एक वो डिस्क्लेमर से सॉर्ट ऑफ दे देते हैं, we don't own the copyrights. Why do they do that? Because they sort of they show their intent right there. We are using this, but we do not have the ownership to it. Because
ड्रामेटिक वर्क है या म्यूजिकल, इट्स नॉट समथिंग कि आप ये नहीं कह सकते कि यार इसको कोई और सुने ना, इसको कॉपी ना करे, बिकॉज दैट्स गोना बी आउट देयर इन द पब्लिक, दैट्स गोना बी व्हाट इट्स पब्लिश्ड. अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, मैं आई वाज इन NIC पेशावर, तो वहाँ पे एक स्टार्टअप थी, शी वाज वर्किंग विद रिगार्ड्स टू गारमेंट्स, तो ऑनलाइन सेल करती थी उनके. सो उनको था कि भाई मैं अपने जैसे खाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल खाड़ी.com है, उनके सारे जो ब्रांड्स हैं, जो क्लोथ्स हैं, व्हाट्सएवर गारमेंट, उनको हम किस तरह बचाएं कॉपी करने से. एनी आइडिया हाउ वी कैन डू दैट? अब मैं मतलब इट्स गोना बी लाइक 200 every session, 200 से 500 तक क्लोज होंगे, तो we cannot have every design registered, every वो. What's the best way forward? I have to secure my. Any idea? Any idea? कॉपीराइट हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि मैं मेरी एक अपने चेन है उसमें, मतलब मैं हर सीज़न लाइक ट्वाइस अ ईयर मैं उसमें 200-300 करती हूँ, तो मैं मतलब मैं उस प्रोसेस में लग जाऊँ कि IPO में हर डिज़ाइन ये इस तरह है, ये फ्लेयर है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है. I it's not just it's operationally impossible. So what they do is that they give a disclaimer on their website with regard to the design. And when they give a disclaimer on the website that all these designs, the IP to it is with the khari.com, XYZ जो भी company है, ठीक है. It's all about showing your intention. One of the questions last time when I was Peshawar, उसमें raise हुआ कि भी मैंने publish करना है paper. जब आप एक चीज़ पब्लिश कर रहे थे, तो मैं इसको कैसे बताऊँ, ये तो कल को इसमें मेरी सारी मैंने एक चीज़ इन्वेंशन करनी है, उसका रिसर्च पेपर है, तो मैं अगर ये अभी से पब्लिश कर दूंगा तो ये तो कल को कोई भी इसमें बना ले. मैं अब जैसे मेरा आइडिया कि जो मैं पानी से बिजली लाऊंगी, मैं कहती हूँ कि मैं ये मीन्स ये गुड्स यूज़ करूँगी इस तरह विद दिस टेम्परेचर XYZ, so how can I secure that? So when you add a little disclaimer, when आप उसमें जब disclaimer ऐड कर देते हैं कि this research paper is regards to ABC XYZ, okay, published on this day, ठीक है, all the goods manufactured, all the details mentioned, I am the the author of it. कल को अब जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी करते हैं ना, जैसे कल को कोई भी बंदा आ सकता है कि यार ये तो उसने मेरा कॉपी किया था उसमें क्या था, तो दिस इज गोना बी सॉर्ट ऑफ एविडेंस फ्रॉम योर साइड, दिस इज गोना बी अ प्रूफ फ्रॉम योर साइड. Okay, let's go back to legal equity. Okay. So legal equity for startup. So I understand जब आप लोगों ने agreement sign किया होगा अभी with regards to incubating agreement, there must be a clause with regards to a certain equity percentage that Nick will be having. ठीक है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको explain कर देती हूँ. Inshallah, when you're able to raise investment of let's USD 50,000, there's going to be a certain equity percentage that NIC Karachi or LMKT will be keeping from it. As of now, if which I understand कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, and वो भी तब होती है कि if there is an active participation, if they are able to connect with the investors, angel investors, venture capitals, अगर उनके effort से, उनके role से they were able to gain that investment, so they keep a certain percentage. लेकिन I can vouch कि अभी as of now we have 3 LMKT has 3 NICs working, and overall Ignite has almost 7 now. So as of now अभी तक कोई भी percentage उन्होंने कभी equity उसमें रखी नहीं है, लेकिन but they can. Why is that? Because like you, there are many other people out there who would want to participate in it, would want to, and it's not something, it's not a profit that you earn. I'm just saying, we've not held anything, लेकिन we just wanted कि वो इसी तरह operations में लगता है for the company, for the NICs. When you talk about equity financing is when entrepreneurs raise capital in exchange for equity in the startups. Once you manufacturing company, you want to take it to commercialization, or you want to take it to the next level, you want to raise a certain capital. 3 main हमारे हैं: angel investors, venture capital, and crowdfunding. Angel investors, any idea? One person who's able to, NICs, आप लोग बताएं, angel investors. Angel investor is the one person who has that, who can assist you, or who can, raise capital.
जो आप बात करिए ना फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली, दैट कम्स इन क्राउड फंडिंग. आई वांट टू रेज इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू, लेट्स से मुझे 10 लाख चाहिए, 10 लाख कुछ नहीं होता लेकिन, so I'll have my own fraternity. मैं अपनी friends अपने उसमें, my colleagues, a small amount, a lot of people, crowd this way, I think you can raise small funds and they can, assist me. That's crowdfunding. Venture capital, certain, organizations, companies, VCs जो आपको help करती हैं to give that capital. What is the gain for you, the startups, the venture? Gain is that आप जब उनको certain equity, certain shares कह लो कि आप उसमें देते हैं उनको, so it takes your work, it gives you funding and takes your work to the next level. आप commercialization तक पे चले जाते हैं. अब जैसे example again, Myonics मेरे mind में आई है. He worked on bloodless dialysis machine. It was like a wow thing a couple of years back. But he didn't have the means. उसने वो चीज़ develop तो कर ली funding के through. 1 से 5 उसने वो equipment बना ली, but he didn't have the capital कि मैं उसको एक big level पे hospitals पे मैं करूँ या लोगों को उनको चाहिएगा. So what he did, he was able to connect with the investors from international foreign entities, and he was able to raise those investment. And now, mashallah, in Shekhupara, he has his own factory, which he's building, manufacturing the bloodless dialysis machine. That's where the VCs or the capital. That's where the capital you need to have. उसमें ये हुआ कि जिसमें भी इन्होंने VC जो भी उसके he was able to gain, they have a certain part in that जिसकी कंपनी थी उसके उन्होंने शेयर्स ले लिए, इक्विटी ले ली. By this means the financial the company stable हो जाती है. You're able to, the vision आपका जो होता है, you're able to take it to the next level. You're able to see from very small level to maybe जैसे beyond sky to the hospitals, and even international. He went international with it, and that's where. And अब उसमें gain आपका ये है, आपने अपने shares उनको दिए, and return they gave you the funding. It's very simple as that. But that needs to be monitored by. There's a shareholders agreement. It depends upon what understanding you guys have with them on our equity investment agreement. That we stay together. Again, I am very insistent on this thing to have it documented, have an agreement. I'm going to be sharing my contact number by end of this presentation. I am part of LMKT and I am there for you guys. So like NSC Peshawar जब मैं गई तो मुझे एंड बाद में कुछ लोगों ने contacted me कि हमसे ना एक सर्विस एग्रीमेंट, हम लोग बाहर के लोगों से एग्रीमेंट्स करते हैं, तो हमें ना एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड लेट से है, मुझसे वो शेयर करें. आई सेड श्योर, व्हाई नॉट. हर एग्रीमेंट सेम नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपका कल को आप यूर एबल टू कनेक्ट विद एनी एनी अदर कंपनी, तो आपका एग्रीमेंट है, सेंड मी फॉर रिव्यू. आई एम हैप्पी टू oblige. इसी तरह एक वन ऑफ स्टार्टअप आस्ट में कि मैंने ना डेटा प्रोटेक्शन लॉज पढ़ने हैं कि हमारे कौन से लॉज है पाकिस्तान में जो डेटा प्रोटेक्शन को डील करते हैं. मैंने अगर मुझे पता हो कि जी मेरी क्या लिमिट्स हैं, कहा गया. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ वेरी let's say an act form में एक very productive law. We have a bill that has been recently passed by Ministry of IT and Telecom, and I asked them कि आप वो review करें, so you get to know the basics. This is my contact number. You guys can reach me anytime, and I'm going to share with my email ID as well. It's going to be legal@lmkt.com. I've had my own email ID, लेकिन मैंने उसको बताया वो कभी कभार वो spellings because it's Hira Chaudhry, तो मैंने कहा spellings आप लोगों को वो कल को confuse ना हो, so it's legal legal@lmkt.com, and you guys can just throw me an email regards to your queries, any legal assistance required. Do we have time? I wanted to show another one of videos.
Why is it asking to download? Why is it video? YouTube, yes. I don't know why is it. नहीं होगा अभी इस पे ये है बहुत ही बढ़िया है। होने दो। इसी के उस पे आएगी नहीं हो सकता। ऑक्स वगैरह लगेगा ना वहाँ पे सीमा से होगा ये जाएगी प्रोजेक्ट पे जाएगी This is going to be a short SCCP video with regards to the company's formation. Any questions so far? Meanwhile, the IT guys fix. Sure. That's one individual. We call it angel investor. They can be someone from the industry. They can be someone having those means to invest in a company. Angel investment, the Indus Valley investment, that comes within the VC. But उनके एक investor हैं, I forgot his name. सुबह बल्कि we were discussing about him. But फर्क नहीं है. He's one person who invests in startups. So he has those means. He has a company. He's a single member. Yeah, that's why it's called an angel investor. It is one single person investing. He is a person who's going to invest in you. It's not he's going to form a company with you. He's going to be partner with you in your company. Okay? He's going to have a certain shares in your company. Okay? Sharing equity, he's going to have, let's say, one of the companies, जैसे भी कल हम परसों we were discussing something, कि हमने उनके IP rights में किया तो we had majority shares in it. Majority से I think 51 shares हमने, I think LMKT के थे, LMKR के थे कि हम लोगों ने उनके shares है ना, ने कहा कि हमारे 51% majority है ना, 51% हम लोगों ने इसमें shares ले लिए उसमें से. We're going to funding that company, we're going to be investing in that company, और उनके certain shares हम लोगों ने ले लिए. Majority, yeah. That depends how well you negotiate, isn't that? If there are multiple, let's say I have 5 investors in it, so I can have उसमें बाकियों के हो सकता है कि 19 हो, I have 21%, whatever the ratio that becomes. Yeah, major. They want to major because when they see it, कि it's something a startup, it's gonna be when they see कि ये simple alphabet में कि बहुत आगे जाएगा, yeah, this is gonna be something that the Pakistan public needs. Okay, it's gonna be something that's gonna be offered to the foreign companies. So they already take a certain equity to it and different part to it, buying distributed, and that's why they वो अपने उसमें investment करते हैं and they take a certain role in it. Yeah, sure. Please. जी please. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी था उसमें करती है. इंटरनेशनल उसके लिए है वाइपो ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो
बट दे डू इज, मतलब ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करते हैं, बट व्हेन दे सॉर्ट ऑफ कह लो बैकग्राउंड चेक उसका करते हैं या ड्यू डिलीजेंस में करते हैं, तो दे डू सी इंटरनेशनल उसमें भी। वो तो ये ना कि आप जैसे आपने एक बुक बाहर या आपने कोई रिसर्च पेपर देखा जो बाहर पब्लिश हुआ था, उसके बाद आपने आके यहाँ पे उसको किया, या आपने आपने कोई पोएम है कुछ भी, तो ओवरऑल उसको वो चेक जरूर करते हैं इंटरनेशनल उसमें, लेकिन जो आपका रजिस्टर होगा ना वो विद इन पाकिस्तान उसमें होगा, रजिस्टर होके वो पाकिस्तानी कह लो कि सिर्फ जुरिस्डिक्शन में उसमें होता है। जी। हम्म, हम्म। उस डाटा के लिए जो आपको अगर लगता है कि आपका कोई कॉपीराइट या आपकी कोई पेटेंट है जो जिसके भी कल को इंटरनेशनल उसमें होगी, द बॉडी फॉर दैट इज वाइपो। ठीक है, वाइपो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, आईपीओ में अभी बिकॉज दिस इज रीसेंट डिबेट एज वेल, दे गोइंग टू बी स्टार्ट सॉर्ट ऑफ कह लो कि वाइपो की एक सब्सिडरी होगी, एसोसिएट कंपनी यहाँ पर डेवलप होगी, जो कि वो कंटेंट विच गोइंग टू बी इंटरनेशनली कल को उसकी जाती है। जैसे यहाँ पे अक्सर स्टार्टअप्स होते हैं जो ये भी कहते हैं कि जी हम लोगों ने उसका जो प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे, लेकिन अभी हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो हम दुबई जाके XYZ अमेरिका जाके कहीं पे उस पर कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रोविजनल या पार्शली उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर बाकी वो वहाँ जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन फिर हम कॉपी राइट एज वेल, तो कॉपी राइट के भी आप पाकिस्तान में उसमें करवाते हैं, बट आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन में भी होता है कि भाई हैव यू, लेट्स से यू वर एबल टू गो टू इंडोनेशिया एंड वहाँ पे आपने वो पब्लिश किया, ठीक है, या आपने अपना एक स्पीच में दिया, तो आप अपने सारे उसमें मेंशन करते हैं कि दिस वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और द सर्टेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया XYZ, तो वो आप पहले से इसमें डिस्क्लेम कर देते हैं। वो सॉर्ट ऑफ वही वाली बात है सारी कि आपकी अपनी इंटेंट एंड क्लैरिटी देती है एंड एविडेंस के तौर पे वो आती है। इस These 11 to 1 is the function, so you can like take your time, हो जाता है तो फिर देख सकते हैं जनरेशन all depends on you. I think I went a little fast as well today. ज़्यादा यूज हो गया। लीगल और एक्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है और रजिस्टर या नहीं
I wanted to show you the part where it's already mentioned इसमें कि memorandum and articles खुद से SCCP में incorporate होते हैं. I'm just going to. Sorry. Okay. I'm going to just retract the presentation as in what we talked about. The first thing is, whatever you understand, have an understanding between your own friends, colleagues, partners, जो भी आपके साथ हैं इसमें, have it documented through a legal document. तो partnership बनाएं, collaboration agreement बनाएं, कुछ भी have it documented. Do not rely on verbal communications or verbal understandings. Verbal agreements भी होते हैं, and they have the same enforcements जो कि आपके रिटर्न उसमें होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ कहता है हमारा, लेकिन उनको प्रूफ करना मुश्किल होता है. कल को आप कहते हैं कि जी हमने एग्री किया था लेट्स से कि ये मुझे पेंट करके देगा मेरा घर, वर्बली हमारा हुआ है, ठीक है.
कल कुछ कि नहीं साथ ये भी कहा था कि अगर बारिश होगी तो नहीं करेंगे, अगर ये हुआ तो कुछ। आई एम नॉट सेइंग कि वो आप हर एग्रीमेंट को हर कम्युनिकेशन को करें। इसी तरह यदि कल को उसने कहा था ये शेयर्स डालेगा, कल को उसने कहा था ये इन्वेंशन नहीं करेगा, कल को उसने कहा था कि ही इज गोइंग टू बी एबल टू जनरेट 10 लाख रुपीज, वट एवर द अंडरस्टैंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड, इट्स नीडेड। कल को वो डिस्प्यूट आएगा ही नहीं अगर आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी। मेरा ये पार्ट था, you agreed that you're going to be pitching in 10 lakh rupees, you agreed that you're going to be making this invention by end of October, timelines, conditions, terms, उन सबको डॉक्यूमेंट करें, ठीक है? That's because you're doing business. That's the first step. You want to do it the right way. Second, you have a question, please? स्टैम्प पेपर्स पे डॉक्यूमेंट आप उसको 20 से 50 रुपए मालियत में इसमें स्टैम्प पेपर्स पे करें। इवन आप उसको लेटर हेड पे भी करते हैं ना, तो दैट इज समवट एन एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड चीज़, वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट, ठीक है? इट्स बेटर टू डू इट द लेजिट वे, एंड दैट इज टू हैव इट ऑन द स्टैम्प पेपर्स। वरना आप लेटर हेड पे भी करते हैं तो आप बाद में उसको रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें तो वो स्टैम्प लग जाती है उसमें, तो उसकी भी वही नौयत होती है कि आप स्टैम्प पेपर के ऊपर करवा रहे हैं जैसे, ठीक है? दूसरा, you're working on your ventures, but have that vision, have that hope, and have that positivity कि हम इसको कल कोई कंपनी बनाएंगे, सिंगल मेंबर कंपनी बना लें, सोल प्रोप्राइटर का करके उसको रजिस्टर करवा लें। ज़्यादा लोग हैं, आप उसको पार्टनरशिप करना है, ठीक है, तो आप उसको एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना लें, ठीक है? हैव इट रजिस्टर्ड। अ कंपनी दैट्स रजिस्टर्ड हैज दैट लीगल आइडेंटिटी which can be sued and which can also sue. बेस्ट पार्ट जो मैंने पहले भी कहा था कि आप आईपी के उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर ये डिस्प्यूट आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, 2-3 लोगों ने इस पर काम किया होता है, उस पर यार इसको ओनर कौन कहेगा, इसकी वो कौन लेगा, इसकी ओनरशिप किसके पास जाएगी, ठीक है? ये इन्वेंशन मैंने की है, मैंने एक चीज़ ये बनाई है, ये हम 3 लोगों ने मिलकर बनाई है, बस who's gonna be yes, so that's gonna be in the name of that company. It's gonna be exactly that's gonna go in its name. So इसलिए and during all this, mashallah, you guys are lucky to be part of NICK, because there were a lot of people who came for pitching and everything, but mashallah, alhamdulillah, you guys are lucky. Make the most of it. They are absolutely amazing, the management team, and they and even I think when I talk about from the from the leadership perspective, तो आतिफ रईस खान साहब बोल के शायद आएंगे, शायद आप लोगों को मिले मौका उनसे मिलने के लिए। There are very few people जो कहते हैं कि जी हम हुब्बुल वतन हैं और जो करके दिखाते हैं। उनकी हर बात, उनका हर एक्शन, he talks about the people, NIC startups, क्या करें, उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह हुआ, that's what is उनके every discussion, every meeting is all about this. वो नहीं कहते कि हिरा कौन है, सना कौन है, मुझे स्टार्टअप्स का बताओ, because these are the people जिन्होंने कल को हमारी इकोनॉमी को they're going to change it, and they're going to take Pakistan to the next level. Man, next level बहुत बोला मैंने आज, I feel like. So if you guys need anything with regards to the legal, I can give you this cause of comfort. Reach out to me, write to me, contact me, and I'll try to assist you. And where there's something which is maybe you need a special process related, या कोई जहाँ पे बहुत ही कोई expert या very integrated चीज़ चाहिए होगी, I'll connect you with those people. या मैं उनसे वो query पूछ के आप लोगों को बता दूँगी. So whatever you guys need with regards to legal, I'm here. With regards to any financing, we have a whole management here who can assist you in that. Yes, sir. देखो उसके मल्टीपल कंप्लायंसेस हैं। आपने अपने जो ऑडिट अकाउंट्स होते हैं उनको जमा कराने होते हैं, आपने उनकी फाइलिंग होती है, रिटर्न्स होती हैं, वो सब आप लोगों ने उसको एनुअली जमा कराने, एनुअली होती हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के। ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, आपने आपके कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे आपके लीगल एडवाइज़र के हैं, ठीक है? अगर चेंजेस उसमें कुछ आती हैं, इनिशियली जब आप करवाते हैं ना जमा, तो दिस फॉर्म 21 होता है, फॉर्म 26 होता है, फॉर्म C होता है। उसमें भी बेसिकली राइट डाउन कीजिए मेरे ये डायरेक्टर्स हैं, आप यू हैव टू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म जो आपके एनुअली उनको वो करेगी, ऑडिट करेगी आपकी, ठीक है? उसकी डिटेल्स, आपका जो लीगल एडवाइज़र है, मैंने फिर बताया कि लीगल एडवाइज़र लगता है यार वी हैव टू हैव अ लीगल एडवाइज़र। आप 5,000 में भी ना
₹4,999 में, 5,000 तो लिमिट है, ठीक है, कि आप उस तक जो है ना आप अपना एक रख सकते हैं लॉयर, ठीक है, लीगल एडवाइज़र। दीज आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो कि आप फॉर्म में ऐड करके एक है, इसमें कोई चेंजेस आती है ना, ऑडिट अकाउंट्स तो आपने हर साल कराने हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं, वो आप क्वार्टरली आप उनको कंपाइल क्वार्टरली करते हो, लेकिन आप एनुअली जमा कराते हो, एनुअली जमा कराते हैं आप उसमें, ठीक है, SCCP, and it's everything is online. Yeah, everything is online. So, you know, from the comfort of your office, from your home, you can do it. आपको जब भी signed audited accounts आ जाते हैं from the audit firm, you just have to, you know, submit it. हाँ, yeah. अच्छा, इंटर लकीली एंड अनलकीली हमारे पास पाकिस्तान में वो लॉज नहीं हैं जो इस चीज़ को ना कैटर कर सकें। तो फॉर सम पीपल इट्स लकी, यू नो, कि कोई ऐसा कुछ लॉ नहीं है जो उनको, यू नो, बार करता है। द बेस्ट वे टू डू इज़, मतलब आप अगर ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि, यू नो, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जैसे मैंने एक मिसाल दी थी खाड़ी वाली, ठीक है, या कोई ऐसी मिसाल कि जी मेरे उस पर कॉन्टेंट होता है, बट आई वॉन्ट टू नो कि जी, यू नो, दिस इज समथिंग दिस आई हैव द ओनरशिप ऑफ, वट यू डू इज़ कि यू पुट ऑन अ डिस्क्लेमर, you give on a disclaimer. Of course, अगर आपके multiple उसमें content होगा या कुछ पे, you have a disclaimer that maybe when you know this, you know, sort of launch the website, it gives out a, you know, disclaimer, a sorry, a pop-up which disclaims that, you know, every content with regards to written, trademark, symbol XYZ is the sole proprietorship या is sole ownership of XYZ company या XYZ website जो है, वो disclaimer आप दे देते हैं. This was a question about where this content is not related to yours. There you also give a disclaimer that this has been, you know, this we do not contain, we do not have the ownership of this. This is being published, but we do not have the ownership of this. जैसे मैंने एक मिसाल दी थी ना कि फोटोग्राफर्स होते हैं वो अक्सर म्यूजिक लगा देते हैं, पिक्चर्स तो उन्होंने खुद ली होगी है, पीछे वो उसको ड्रामेटिक बनाने के लिए म्यूजिक लगा देते हैं. So they mention that there, okay, this we do not own the rights to this, you know, music XYZ song. So yeah, it's all about, इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि you show your intention. मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इसको मिसयूज़ करूँ, मेरी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको अपना कहूँ, मेरी मिसयूज़ नहीं, मैं इसको सिर्फ एक फॉर माई अंडरस्टैंडिंग या मेरे अपने लोगों के अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फर्दर लोगों के पहुँचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, लेकिन साथ ही मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं है. इट्स ऑल इन दैट इंटेंशन, व्हेन यू शोज इट शोज योर क्लैरिटी, वो उसको क्लैरिटी दे देता है. दैट्स व्हाट इट इज, सिंपल एज दैट. एनीवन एल्स? The name we have is SMC हम कहते हैं, जो भी एक सिंगल मेंबर जो सोल प्रोप्राइटर है ना. I'll give you by example. मैंने एक अपना काम शुरू किया, मैंने उसको पहले FBR के साथ रजिस्टर कराया एक NTN लेके एज अ सोल प्रोप्राइटर. नाउ आई थिंक, यू नो, आई एम गोना मेक इट एट अ कंपनी लेवल. तो मैं उसको क्या करती हूँ कि एक सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाती हूँ, SMC कहते हैं उसको, SMC प्राइवेट लिमिटेड. SCCP से जब रजिस्टर्ड होगी तो आप जो कहना चाह रहे हो वो SMC बनती है. प्राइवेट जब आप कह रहे हैं ना, वो दैट्स नॉट सिंगल, दैट्स मल्टीपल. SMC is single member company. That is registered. SMC Private Limited is registered with Securities and Exchange of Commission of Pakistan. उन्होंने बल्कि शुरू में presentation के SMC से ही शुरू किया था. This link, this video that I shared with you, scp.org.pk पे जाएं. उन्होंने बिल्कुल सामने, you know, on the first page, very first page, you have a video. Yeah. Sole proprietor, when you speak about sole proprietor, it's something, उसको कंपनी लेवल पे नहीं होता. इट्स समथिंग, यू नो, यू सॉर्ट ऑफ अपने बिजनेस के शुरू करते हैं. NTN उसका सिर्फ NTN होता है, जनरेट होता है FBR के थ्रू. ऑल द राइट्स, ऑल द ऑब्लिगेशंस दैट द कंपनी हैज़, ठीक है, दैट इज नॉट विद, यू डोंट गेट टू हैव दैट विद एज अ सोल प्रोप्राइटर लेवल. दैट इज़ वेरी इनिशियल लेवल. आपने कभी जब भी आके काम करना है, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करनी है कुछ भी, people will be very reluctant to work with someone who has only registered with an FBR, because they will be, you know, they will be cautious about, you know, investing in it.
they'll be a little reluctant about it. उनको होगा कि यार ये तो सिर्फ sole proprietor, it's not even, you know, it's for a company, it's not registered with the companies, ठीक है? उसका सिर्फ देखिए मुझे बताएं, एक एनटीएन लेने से, मैं एफबीआर में आज अभी करती हूँ, अभी मैं करूँगी तो शायद 24 घंटे के अंदर मुझे पास मेरे पास एनटीएन आ जाएगा, ठीक है? दैट इज़ अ वेरी, इट्स नॉट इवन प्रॉपर कंपनी फॉर्मेशन, दैट्स जस्ट टू, यू नो, मीन्स ऑफ वर्किंग। मैंने अपना, जैसे वो कहते हैं कुछ कंपनी, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं कि जो छोटे लेवल पे सर्विसेज के लिए वो अपने एनटीएन जनरेट कर देते हैं, बट नॉट फॉर्म अ प्रॉपर कंपनी। इफ़ यू वांट टू हैव a proper company formatted, or if you want to have लोग उसमें इन्वेस्ट करें, हैव अ कंपनी फॉर्म्ड, सिंगल मेंबर कंपनी करें ना, जैसे आप सोल प्रोप्राइटर करें, हम सिंगल मेंबर करनी है। दिस इज बेसिकली स्टेप्स जो फॉलो। 80% ऑफ द कंपनी स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटर, वो एक एनटीएन ले लेते हैं एफबीआर से, उसके बाद वो शुरू करते हैं कहीं ना किसी काम से। लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज, आई कैन टेल यू, दे विल नेवर vouch to work with a company that's been just registered as a sole proprietor. That's not actually not registered with SCCP. You know, that's registered with the FBR. उन्होंने तो सिर्फ अपना एक कह लें कि सिर्फ टैक्स डिडक्शन उसके लिए उन्होंने एक एनटीएन उसमें लिया। When you register with SCCP, the Securities and Exchange of Commission of Pakistan, you are regulated. You have certain rights. ठीक है, वो आपको मॉनिटर करता है, ठीक है। And when you have that name that is registers, you know, itself is that you already are working on compliances. You're already working proper legal formal way. So that shows a lot. That is nowhere comparative to what a sole proprietor is. Yeah. सरदर्दी नहीं होती बेसिकली, जो सरदर्दी जिसको वो कहते हैं ना, वो कहते हैं उस प्रोसेस को, जैसे इन्होंने बात की ना कंप्लायंस की प्रोविजंस की जो बात है, ठीक है, वो सरदर्दी नहीं है, वो प्रॉपर वे है डूइंग इट। एक वन थिंग ऑफ डूइंग थिंग इज कि यार एक मैं बस चलाऊँ वाला काम हो, एक यू नो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ कंपनी, यू नो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ कंपनी, मैं एक प्रॉपर तरीके से काम उसमें करेंगे, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस ऑल राइट। सरदर्दी नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो फॉलो करना होता है, और वो प्रोसेस भी SCCP इज ऑन दिस कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। अभी अब जैसे मैंने ये वेबसाइट दिखाई, वेरी सिंपल, जैसे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड। कोई ऐसा नहीं है कि यार मुझे उधर हैसल होना है, मुझे SCCP 6 चक्कर लगाने हैं। जस्ट डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ऑफिस। आपने आधा घंटा भी शायद नहीं लगेगा आपको। बस यू गेट टू नो कि आपने जी मैंने ट्रेड नेम क्या है, मैंने रजिस्टर कराना है, उसके बाद यू नो वेरी सिंपल। सरदर्दी नहीं, हैसल फ्री हो मुझे लगता है बाद में हो जाता बंदा। या यू क्लोज डाउन थ्रू SCCP, देयर इज अ प्रोसेस, वाइंडी का प्रोसेस है, वो भी इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन है, ठीक है। उसमें आप बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी ऐड करते हैं, आपके अभी जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका कंसेंट ऐड होता है। यूजुअली उसमें AGM कॉल होती है, पहले एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। उसमें इंटरनली इसमें डिस्कस दैट वी आर गोइंग टू बी वाइंडिंग अप विद द कंपनी, ठीक है। वो आप सबमिट कराते हैं कि यू नो दिस हैज़ बीन, मतलब वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ द यू नो द पार्टनर्स टू इट, दे हैव ऑल एग्री टू वाइंड अप द कंपनी फॉर व्हाटसोएवर द रीजन। दैट्स ऑल। या ओपनिंग क्लोजिंग दिस, उसमें इवन चेंज आपका आता है। आप जैसे मैंने भी कहा कि अगर आप लोग रजिस्टर करानी, यू कैन इवन रजिस्टर विद LIC's नेम, इस बिल्डिंग के नाम पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, है ना। आप इसको इस कंपनी को रजिस्टर कराएं, बाद में हमें चेंज कराना है। अगर आपने कल को लेट्स से आप शुरू करते हैं कि जी मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है, कल को आप इसको चेंज कराते हैं, यू नो मैंने अपने मैंडेट को बढ़ाते हैं आपने, ठीक है। जो मैंने बताया कि दे आर 2 मेन documents of a company, memorandum of association and articles of association. Memorandum is the charter, मेरा business क्या है, मेरा mandate क्या है इस कंपनी का, उसको डील करता है। आर्टिकल्स है कि मैं कंपनी कैसे रन करूँगी, मेरे 6 डायरेक्टर्स होंगे, मेरे ये मीटिंग्स हुआ करेंगे क्वार्टरली, ठीक है, सारे ऑपरेशंस, ठीक है। उसके रिलेटेड की जो हमारी जो भी हम रेवेन्यू लेट्स से जनरेट करेंगे, तो हम उसके डिविडेंड्स देंगे, हम प्रॉफिट्स कितने देंगे, या फिर हम उसको कंपनी ऑपरेशन व्हाट्सोएवर द कंपनी, वो आपके आर्टिकल्स में आता है। कल को कोई भी चीज़ें मेमोरेंडम आर्टिकल्स में चेंज होती हैं, वो भी SCCP के वेबसाइट से होती हैं। वेबसाइट एक प्रोसेस, वो आई थिंक 90 डेज के में आपके पास आ जाती हैं अप्रूव होके उनके। सो इट्स अगेन आई एम इंसिस्टेंट ऑन इट कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी लगती हैं कि यार ये थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन दे आर द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। या एनीवन एल्स प्लीज। Sorry, I couldn't hear you. Please.
You want to wind it up, or you want to have it in? One wants to wind it up, and one wants to carry it. Hmm. Again, the first who wants to wind it up has some share. Yeah, yeah. Whether he has to dilute the share, what's the process of exit of that person? Basically, when you ever have shares, there's always monitored by a shareholders agreement. तो आप SEC की उस वेबसाइट पे डालते हैं कि आपने जो, अगर आपके 5 पार्टनर्स हैं उसमें, everyone has their own shareholder. अगर एक उसमें से एक कहता है कि मेरे पास let's say 10 shares हैं या XYZ जितने भी shares हैं, 10% है, ठीक है, 10% equity है, ठीक है. As per this agreement, पहले तो आप करेंगे उसमें वो चीज़, ये भी चीज़ mention होती है कि in case if he is not able to fulfill the commitments under, if he wants to let's say not part of it equity, so he can transfer those to another person in the company, another person, ठीक है, through a document, ठीक है, transfer of shares agreement, and accordingly अब SCCP को अपडेट करते हैं उसमें, ठीक है. एक उसमें जैसे 5 पार्टनर्स थे, या 4 पार्टनर्स नाम, ठीक है. जो शेयर्स थे पहले 2020 थे लेट्स से सबके पास, तो अब एक के पास 40 हो गया, बाकी के पास 20 है. या दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव एग्रीड एज पर द एग्रीमेंट. आप लोगों ने जब शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट किया था उसमें क्या एग्रीड था कि इफ यू गोना बी गिव यू एग्रीमेंट्स गोना बी सर्टेन अमाउंट आप उसको ट्रांसफर करेंगे, जिसके अगेंस्ट उसने पहले बाय किए होंगे ना शेयर्स. There is no specific law that's going to be dealing with it, but there is going to be more of a what understanding you guys had initially built, ठीक है. So I think if there are multiple partners to it, you can all have वही वाली बात है कि negotiate करके वो उसमें वो चल सकता है. But यही वाली बात जब शुरू हमने की थी उसमें की थी कि you have to have an agreement, एक dispute आने से, yeah. Please do, sure. Any more questions, please? अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं. I've been thinking about this thing. This is does not related to the legal वो. What is achievement for you guys? मतलब you probably now in कभी ऑफिस में, कभी इसमें होगा कि यार, या कभी घर में, या कभी फैमिली में. What is achievement for you guys? मतलब if I had to ask you, what is your achievement? What would that be? It's got nothing to do with legal. It's just वैसे ही. Share, I'll ask you. If I had to ask you, you come to me for an interview, let's say, and I'm going, okay, tell me about what is your biggest achievement? Yeah. This is a question that I've been thinking a lot. For some days, I don't know, this is going in my mind कि अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरी achievement क्या है. So it's no that's no, that's I think that's I don't know, I don't think that's achievement. Yeah, I think wherever we are in life in one way or another, that's somewhat an achievement, to overcome some obstacles. अच्छा मुझसे मैं बताती हूँ कि ये सवाल मेरे माइंड में क्यों है. Yeah, it's very it's not you can sort of quantify it, you cannot do that. मैं जब LMKT में इंटरव्यू के लिए आई तो मुझसे ये पूछा गया, so what are your achievements? So I think मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि Ignite में I've been managing the legal department all by myself for last 3 years, and Ignite is a happening place. 7 NICs हैं, और अभी हैदराबाद और फैसलाबाद का मैंने उसमें मतलब साइड नेगोशिएशन सब कुछ मैंने किया, तो that's my achievement. But when I came and joined LMKT, I got the offer and everything, so I was just thinking, is this my achievement? It's one day all of a sudden something popped up to me, and I think we were having discussion in the office. I think my achievement, if I had to tell you, was in professional capacity, is that wherever I've gone on merit. I've eradicated nepotism. मुझे कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि कि यार I've applied for this job. So I've worked with 4 organizations: Jazz, Chinoy Group, Ignite, and now LMKT. And I think I feel proud and and achieved this कि यार I've gone on merit. Out of whatever the selection people, there were a lot of people, of course, I understand, much more capable with regards to me, but alhamdulillah, this is my achievement and I've gone on merit. Shay said to me the other day, the merit goes a very long way. He said to them,
It's very true. It does. चीज़ें जो आपके हासिल हो जाएं किसी और तरीके से, उनका बहुत थोड़ा टर्म होता है, बहुत थोड़े अरसे के लिए होती हैं। असूल के साथ, अच्छी नीयत के साथ जाना, किसी चीज़ का भी काम करना, वो बहुत दूर तक जाती है। And to be very thankful at all times to, we are here, alhamdulillah. It's you. I think वो खुद एक पॉजिटिविटी दे देता है आपको, कि alhamdulillah, you're healthy, you're working, and you get to meet such amazing people. So alhamdulillah, that's an achievement, and I am very thankful to Allah Pak. So I think my achievement I thought is to be selected and married. And I think आप लोग जहाँ भी हैं, जिसमें भी हैं, you're already achieved a lot. So be very proud of yourself. दुनिया बाद में आपके बारे में proud होगी, पहले सबसे पहले you should be proud of yourself. माशाल्लाह. Any more questions? I'm so glad I had this discussion. It was not something planned. एकदम से I don't know why I उनसे बात करते करते एकदम से मेरे mind में आया, तो मैंने कहा चलो I'll share it with such amazing people. Any more questions? You guys can reach me. मैंने number तो आपसे share किया है. legal@lmkt.com is the email ID. And उसके बाद I'll be here for a while. If you want to come up to me, interact, please do. Thank you so much, everyone. Thank you. I had a wonderful time. Thank you. Thank you.